बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके बारे में दुनिया में पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो इसके बोरोअर्स हैं उनमें एक रिजेंटमेंट पाई जाती है कि इसकी कंडीशनैलिटीज बड़ी सख्त होती हैं और उसके असरात बड़े नेगेटिव पड़ते हैं ऑलरेडी ऐसी इकोनॉमी पर जो कि मसाइल का शिकार होती है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर उसके मसाइल इतने ज़्यादा पैदा होते हैं लोन लेने के बाद, तो फिर वो मुल्क उसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आईएमएफ खुद कभी किसी कंट्री को अप्रोच नहीं करता। ये वो गरीब ममालिक हैं, वो खुद उसके पास जाते हैं। आप किसी बैंक से कर्जा लेने जाते हैं तो उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं, वो अपनी टर्म्स पर कर्जा देता है। वो आपकी टर्म्स पर कर्जा नहीं देता और उसकी सबसे बड़ी एक ही कंडीशन होती है कि वो अपने कर्जे के बारे में कॉन्शियस होता है, उसकी सिक्योरिटी चाहता है कि जो भी शख्स उससे कर्जा लेता है वो पे बैक करने की कितनी सलाहियत रखता है या वो अपनी इकोनॉमी को रीजनरेट करने की कितनी एबिलिटी रखता है। अगर आईएमएफ ऐसी चीजों का गारंटी चाहती है कि आप में अपनी इकोनॉमी को रीजनरेट करने की कितनी सलाहियत है, वो उसका एक राइट है। दूसरी बात ये है कि अगर हम कहें कि आप हम पर कंडीशंस ना लगाएं, तो फिर किस पॉइंट पर आप कह रहे हैं कि हमें कर्जा दे दिया जाए? क्योंकि जो चीज़ एस्टेब्लिश होती है किसी मुल्क की वो ये होती है कि हम अपनी फाइनेंशियल सेटअप को मैनेज करने में नाकाम हो गए हैं, अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सस्टेनिंग ग्राउंड पर बिल्डअप करने में नाकाम हो गए हैं, आप हमारी हेल्प को आइए। तो अगर उसमें कंडीशन ये लगाता है वो आईएम का एक ही शर्त पहली होती है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट करें, कि जिस मुल्क के अखराजात ज़्यादा हों और आमदनी के वसाइल कम हों, उसको एक ही हिदायत होती है कि आप अपने अखराजात को कम करें। नंबर 2, आप रेवेन्यू जनरेशन की कैपेसिटी को एनहांस करें। उसका तरीका क्या है? या तो वो बिज़नेसेस जो गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं, उनको वो प्रॉफिटेबल बनाए। अगर उनको दस्तूर खसारे में रखना है और खसारा आईएमएफ से दूर करते रहना है, तो फिर आप पे बैक कैसे करेंगे? फिर आईएमएफ कहती है फिर आप ऐसे करें अवाम पर टैक्स लगाएँ। पहली तो बात ये होती है कि आप टैक्स इवेजन को कंट्रोल करें, कि जो लोग टैक्स नहीं देते, आप उनसे टैक्स लें। अगर नहीं ले लेते तो फिर जो देते हैं उनसे ज़्यादा ले लो। और ये आजकल चल रहा है, दुनिया की इकोनॉमी थर्ड वर्ल्ड में इनडायरेक्ट टैक्सेस से चल रही है, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। वो चूँकि हर शख्स ने जो भी चीज़ खरीदनी है वो गवर्नमेंट को 17% दे रहा है। तो पॉइंट ये है जो बात हम करना चाहते हैं, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। दुनिया में बड़े-बड़े मुल्कों ने कर्जे लिए। देखें सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी तबाह हो गया, फ्रांस तबाह हो गया, यूके तबाह हो गया एंड मेनी अदर यूरोपियन कंट्री। वो दोबारा बिल्डअप हुए और अमेरिका से कर्जा लेकर बिल्डअप हुए, जिसे हम मार्शल प्लान कहते हैं। उन्होंने बिल्डअप किया और इतना बिल्डअप किया कि ना सिर्फ उन्होंने उसके कर्जे वापस किए बल्कि वो दुनिया को कर्जे देने की पोजीशन में चले गए। चीज ये है कि कर्जा लेने के बाद अपने पांव पर खड़ा होना और अपनी सलाहियत में, जिसे हम रीजनरेशन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं, उसमें लेकर जाना जो है, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज अवर ड्यूटी। पॉइंट सिर्फ इतना है कि वो कौन से मेजर्स हैं जिन पर दुनिया के कई मुल्कों ने अपने आप को उठाया, गुर्बत से निकाला, बहुत अच्छी पोजीशन पर लेके गए और इस वक्त वो एक बाइज्जत मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो वो पॉइंट्स क्या हैं जिन पर हम भी और दुनिया के सारे तीसरी दुनिया के ममालिक जिन्हें हम कहते हैं इस वक्त इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में मुब्तला हैं, वो कैसे ऊपर जा सकते हैं, एज ए स्टूडेंट हम कैसे प्रपोज कर सकते हैं, वो मैं चंद एक चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो ये 7 पॉइंट्स प्रोग्राम है। एज ए स्टूडेंट मैंने चीज पेश की है, इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें इजाफा कर सकते हैं। नंबर 1 है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। Pakistan can implement comprehensive economic reforms to promote sustainable economic growth, increase revenue generation, and reduce expenditure. This could involve measures such as improving tax collection system, reducing corruption,
promoting private sector investment, and enhancing governance. Number two, diversification of revenue sources. Pakistan can work on diversifying its revenue sources to decrease its dependence on loans. This can include developing industries, attracting foreign direct investment, boosting exports, and encouraging entrepreneurship and innovation. Number three is the strengthening fiscal discipline. By improving fiscal discipline, Pakistan can manage its finances more effectively. This involves controlling government spending, implementing sound budgetary policies, and prioritizing investments in sectors that can stimulate economic growth. Number four, attracting foreign investment. Encouraging foreign investments can provide an injection of capital into the economy. Pakistan can focus on creating a favorable business environment, offering incentives to foreign investors, and ensuring a stable regulatory framework. Then is the promoting exports. Expanding exports can generate foreign exchange and increase revenue. The government can support industries that have export potential, provide incentives to exporters, negotiate favorable trade agreements, and improve infrastructure to facilitate trade. Number six, debt restructuring and negotiation. Pakistan can explore options for debt restructuring, seeking longer repayment periods, lower interest rates, or even debt forgiveness through negotiation with creditors, including the IMF. Number seven, developing domestic industries. By developing domestic industries, Pakistan can reduce its reliance on imported goods, thereby conserving foreign exchange reserves and improving its balance of payments. This can be achieved through policies that support domestic manufacturing, encourage innovation, and promote competitiveness. और आखिरी बात जो बड़ी important है वो ये, it is worth mentioning that these strategies require long-term planning, commitment, and concerted efforts from the government, private sector, and society as a whole. Additionally, improving political stability and adding to the consistency and continuity of rules and regulations governing foreign trade and investment. These are not supposed to change with the change of the governments. So this is all from my side. Thank you very much for listening. God bless you.